Hello everyone, we are discussing the third chapter of biology of 9th class, and that is diversity in living organism. We are discussing types of vertebrates, in which we have already discussed the general characters of class Cyclostomata, Pisces and Amphibia, and now we will talk about the general characters of Reptilia, that is the fourth class. So let's get started. General characters of class Reptilia. Class Reptilia comes from the Latin word reptum. Reptum means to creep or to crawl. So the first feature of Reptilia, reptum, Reptilia word comes from reptum word, that is the Latin word, and the meaning of reptum means to creep or to crawl. To creep or to crawl. So those organisms come in this class that creeps or crawls. So let us see few examples. The common examples of Reptilia are wall lizard, that may be found in everyone's house. Wall lizard. The common example of Reptilia, chameleon, turtle, tortoise, crocodile, alligators, snakes, and so on. So on are the examples of class Reptilia that used to creep or to crawl for their movement and locomotion. They move from one place to other through creeping or crawling. So the next is, here we will take up the example of wall lizard. So the organisms that are found in the Reptilia, the body of that organisms are basically divided into head, neck, trunk and tail. Their body is divided into head, neck, trunk and tail. And if we talk about the habitat of such organisms, they are mostly terrestrial. That means that they are found on land. Mostly they are terrestrial. Few are aquatic also. That means few of them are present in water. So their body is divided into head, neck, trunk and tail, and their skin is dry, as there is no glands present in the skin, so the skin is dry. Their skin is dry, waterproof
That means skin will not absorb water, so it is waterproof. Cornified skin. Cornified means rough and dry skin. Cornified with epidermal scales or scutes. Epidermal scales or scutes are present to protect them from outer atmosphere, outer harsh condition. So the skin are dry and cornified. They are covered by epidermal scales or scute to prevent them from outer harsh conditions. Next is, here also the tympanum. Tympanum represents ear. External ear is absent. This is the external ear that we have. This is absent in case of reptilia. So external ear, external pinna is absent in case of reptilia. Only the hole is present, and that is tympanum. So the ear of reptilia is known as tympanum. Next is they are tetrapod. Tetrapod means having two pair of limbs. Two pair of limbs, in which the first one is forelimb. Forelimb is present at the upper part of the body. Upper part of the body, it is pentadactyl. Pentadactyl means 5 digits are present with claws. And what is claws here? Claws is the sharp nails. Here sharp nails represents claws. So forelimb is the upper part of the body. Forelimb is present at the upper part of the body. It is pentadactyl. That means 5 digits are present with claws. Claws is the sharp nails. Next is hind limb. Hind limb, as we know that hind limb present at lower part of the body. Hind limb is present at the lower part of the body. It is also pentadactyl plus claws. Another important feature of reptilia is that they are carnivorous. Carnivorous are those organisms that are flesh eating. Flesh eating animals are known as carnivorous, while some are, with the exception of tortoise. Tortoise is the only omnivorous organism that eats both flesh as well as greeneries. That eats both. So, like human being, tortoise is also omnivorous. Omnivorous means both, that eats both flesh and greenery. Okay. Now, if we talk about the
respiration among reptilia, they respire by lungs. Reptilia respire by lungs. Now if we talk about the circulation of reptilians have three-chambered heart. Their heart is three-chambered. That means 2 auricles and 1 ventricles. Here is an also exception in case of crocodiles. Crocodiles have 4-chambered heart. This is reptilians are omnivorous. Omnivorous means those organisms that lay eggs. Here important point is to be noted that reptilians lay eggs on land. Unlike amphibians lay their eggs in water. But here the reptilians lay their eggs on land because their eggs are covered by hard shell. They lay eggs on land. Their eggs are covered with hard shell. So there is no need to move in water. So this is omnivorous, and this is cold-blooded animal. Cold-blooded animals means their temperature vary according to the environment. Their temperature varies according to the external temperature. अब हिंदी में हम जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं. आज हमने पढ़ा है जनरल फीचर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया का, जो कि आया है रैप्टम शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू क्रीप और क्रॉल, यानी रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म, रेंगने और घसीटने वाले, अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म को रेप्टिलिया में रखा गया है. ठीक है, तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स अपने ही घर में हम पाते हैं. वॉल लेजर्ड होता है, कैमलियन, टर्टल, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, स्नेक्स एंड सो ऑन आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेप्टिलिया. इनकी बॉडी की अगर बात करें तो इनकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है. अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर पाए जाते हैं. एक्सेप्शनल केस में कुछ जो हैं वो वाटर में पाए जाते हैं. ठीक है. देयर स्किन इज़ ड्राई. इनका स्किन जो है ड्राई है, वाटर प्रूफ है, पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कॉर्निफाइड रहता है. एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स रहते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, बाहरी हार्श वेदर से बचाने के लिए. और इनके कान को भी टिम्पैनम कहते हैं. इसमें एक्सटर्नल पिन्ना जो हमारे ह्यूमन बीइंग में होता है वो एब्सेंट होता है, और इनका जो कान है वो टिम्पैनम कहलाता है. दे आर टेट्रापोड. डैट मीन्स कि इनके पास
2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। तो 4 लिम्ब जो अपर पार्ट में पाया जाता है पेंटाडक्टाइल होता है, यानी कि 5 डिजिट्स उसमें होते हैं, प्लस क्लॉज भी होते हैं, क्लॉज यानी कि शार्प नेल्स होते हैं। हाइंड लिम्ब जो कि लोअर पार्ट में होता है, ये भी पेंटाडक्टाइल और क्लॉज के साथ होता है। ठीक है। कार्निवोरस रेप्टिलियन जो है वो कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे टॉर्टोइस जो है ओमनीवोरस है, ये दोनों फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीनरीज भी खाते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेप्टिलियंस के पास लंग्स होता है, उसी से वो रेस्पायर करते हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट इनमें मोस्टली 3 चैम्बर्ड होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है। ओमनीवोरस होते हैं, ये एग ले करते हैं, लेकिन इनके और एम्फीबियंस में यही डिफरेंस है कि एम्फीबियंस पानी में चले जाते हैं एग ले करने, लेकिन रेप्टिलियंस एग लैंड पर ही ले करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टेंशन नहीं होता। उनका जो एग है वो हार्ड शेल से कवर्ड रहता है, इसलिए वो एग ले करते हैं लैंड पर ही। कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। देयर टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर। बाहर का जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वेरी करेगा। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज their body temperature varies according to the external temperature. So this is all about the general characters of the class Reptilia. In the next session we will talk about the general characters of the class Apes. Till then, goodbye. Thank you.